vaccination drive in Delhi, Karnataka and Maharashtra and several other states have been halted for time being due to the unavailability of vaccines. Over 10 states including Uttar Pradesh, Odisha, Telangana, Karnataka and Maharashtra have said that they will be procuring vaccines directly from vaccine manufacturers. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said that states competing with each other to procure vaccines portrays a bad image of India. Kejriwal has asked the centre to procure COVID-19 vaccines on behalf of states. Indian states left to compete or fight with each other in international market. UP fighting Maha, Maha fighting Odisha, Odisha fighting Delhi. Where is India portrays such a bad image of India. India as one country should procure vaccines on behalf of all Indian states. Union Health Minister on Wednesday had said that state governments can obtain 50% of the vaccines directly from vaccine manufacturers. Union government is giving 50% vaccines to states free of cost. Kejriwal said India has better negotiating power with other countries compared to individual states. Also, when we approach vaccine manufacturers and their countries as India rather than individual states, our bargaining power is much more. Indian government has much more diplomatic space to negotiate with their countries. Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia had earlier said that the Delhi government would also procure vaccines from manufacturers. Sisodia had said that the Delhi government's plan to procure 1.34 crore doses was rejected by vaccine manufacturers. Over 100 vaccine centers in Delhi are closed due to a shortage of COVID-19 vaccines. Speaking of the COVID-19 situation in Delhi, Manish Sisodia said that there is a sharp decline in the daily number of COVID-19 cases. केसेस तेजी से कम हुए हैं. जितनी तेजी से केसेस बढ़े थे उतनी तेजी से दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बढ़ी थी. और अब जबकि केसेस तेजी से नीचे आए हैं तो अस्पतालों में बेड्स भी खाली हुए हैं और ऑक्सीजन की डिमांड में भी कमी आई है. जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने कैलकुलेशन करके देखा था कि उस समय के हिसाब से हमको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी. नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ केसेस इन हॉस्पिटल्स, बेड ऑक्यूपेंसी, सबको कैलकुलेट करते हुए हमें 700 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी. आज हमने फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है. तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, ज़रूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है. Delhi's COVID-19 positivity, which was over 30% during the end of April, has now come down to 14%. Delhi reported 10,400 new COVID-19 cases in the last 24 hours.